would like to congratulate all the students for their courage and for their perseverance, right? And कुछ गल्लां आपां पहले clear कर लईए. I don't think you people need to thank me, and I also won't thank anyone who is present there. Why? Because it's your own choice to be here, and it's your own responsibility to be here. And I have come here not as a teacher, not as a representative of any group or any collective or any society. I have come here as a human being who think that it is my responsibility to be here. That's it. Right? And nobody should thank me for this. I don't think this should be done. Right? And secondly, जो भी मैं कहांगा, जो भी मैं बोलांगा, वो मेरी अपनी समझ है, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ absolute truth nahi hega, right? I don't think you people should follow it blindly, right? You should always cross check what I will say, right? Because this is what I think democratic learning should be, right? Because ek ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡੈਮੀ ਗੋਡ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. वो चंगी गल है, पर रब भी झूठ बोलता है, गुरु भी झूठ बोल सकता है, राइट? तो people, we need to recognize this if we want to live in a democratic society where we want to nurture human beings who can think independently. And independent thinking means you can question everybody, no matter how respected he or she is, right? So I think this is how we need to approach whatever I will be saying. ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ what language I will be speaking in. I'll try to speak in all the languages, right? ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, right? And most of us enjoy those movies. They go to the cinemas to watch those movies. We listen to those songs, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ, right? So this is the first issue that I will be dealing with. The second issue is the notion of family. मैं बहुत चिरां तो, बहुत समयां तो family ਦੇ notion ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ family ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? So this is the second issue that I'll be dealing with, and the last one is the relationship between freedom and responsibility. Right? And of course with reference to the question what is freedom, right? So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਈਟ? ਗਾਣੇ, I think ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ Cocktail. Most of you have seen this movie Cocktail. Now when the movie came, ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? Why? Because ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਐਕਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਐਕਟਰ ਸੀਗਾ. But I think secretly this movie actually reinforces the patriarchal mindset. How? That is very important to understand. So there are 3 characters in the movie. One is Veronica, one is Meera, and in between these 2 women you have Saif Ali Khan. Now the very naming of the characters is very interesting. Veronica, it has a certain sound to it.
it means Veronica is a very smart and sharp girl. And then you have the classical name Meera, right? So this is how the movie starts. Chef Saif Ali Khan, right, meets of course Meera. Then they have this fight. They don't like each other, and then Saif Ali Khan meets Veronica also, right? And of course Saif Ali Khan likes Veronica, right? Because Veronica plays a prank with Saif Ali Khan, right? So in the first part, Saif Ali Khan, right? Remember the typical Indian male. He represents the typical Indian male who wants to live with Veronica, who wants to make out with Veronica, who wants to drink with Veronica, who wants to smoke with Veronica, who wants to dance with Veronica, who wants to go to the discs with Veronica, right? But still Veronica is not his true love. The very notion of true love is very interesting. And finally, towards the middle of the movie, Saif Ali Khan falls in true love with Meera. Now, if you compare the two characters, Meera and Veronica, Veronica is economically independent, she is psychologically independent, she is sexually independent. Now, but true love happens with Veronica. Veronica क्या है? Meera. उससे तो Meera. मीरा क्या है मतलब? She doesn't have her own opinion. वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती बेचारी, right? वो अपने हस्बैंड को क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज सैफ अली खान falls in true love with Meera, and the movie continues. Finally, towards the end, what happens? The end is very interesting. Veronica also realizes that okay, Saif doesn't love me, and the true lovers Meera and Saif Ali Khan come together. So what is the underlying message of the movie? The underlying message of the movie is either you can have independence or you can have true love. It's your choice. But if you want true love, you need to be like Meera, very docile, very silent, who was waiting for a great lover to fall in love with her, right? And then they will live together for the next Saat Janam, right? And this is what Veronica also does. You know, in the second half of the movie, Veronica tries to change her lifestyle. She wants to be like Meera because she comes to know that Saif's mother would like it. So this movie typically symbolizes the problem that Indian society is presently facing, and Indian male is facing. So prior to the marriage, Indian male wants to be with Veronica. After the marriage, the Indian male wants to be with Meera. And the interesting thing is, Indian male has both. That is absolutely amazing. And you can see the kind of lighting that was used in the movie, the kind of music that was used in the movie. I mean, if you will be an independent woman, you will not get true love. Why? Because nobody likes independent women, at least in our society. Another example. So there is this movie called Piku, right? Another interesting movie, and which apparently at the level of form, at the level of cinematic technique is not as radical, but at the level of content is extremely radical. Why? Because there is a scene in the movie Piku, right, where Piku and her father, you know, they are in a family get together, and one of the relatives, yeah, relatives बहुत कमाल के चीज होते हैं मतलब, right? So one of the relatives introduces a boy to Piku के, you know, वो बाहर जॉब करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, इतनी बड़ी हो गई है, 30 साल से ऊपर हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई. So remember the age of 30. It's very significant when it comes to women, right? तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, right? He says, this girl, Piku, she is my daughter, right? And she is physically independent, sexually independent, psychologically independent, and financially independent. Would you like to marry her?
वो बेचारा सोचता रह जाता है ये Yes. बच्चा क्या बोल गया मेरे सामने, Yes. because he never expected कि somebody can introduce a girl to me who is from abroad in this manner. This is very significant, right? And India में बहुत कुछ हो रहा है, आप देख ही रहे हो आजकल. On the one hand, we have decriminalization of homosexuality. That's a great achievement, right? On the other hand, Tanupriya became the first female president of Punjab University Students' Council. On the other hand, every day we listen to the news that women are getting raped, or somehow rape is becoming more visible. The multiple forms in which it is exercised and executed at all levels. Few days back, there was this video of a young couple where this boy from Delhi or Haryana was brutally manhandling a girl. And there was this video that became a big issue in Haryana, right? So, एक तरफ तो इतने radical steps, एक तरफ ऐसा कुछ. On the one hand side, we are introducing courses rather on how to have a sanskari bahu. On the other hand side, we have the notion of virginity on the Indian cinematic screen in the public discourse. The very first movie that I came across in which this word virgin was used was the movie Pink. Before that, in the history of Bollywood cinema, as far as my homework is concerned, nobody uttered this word. सबको इससे डर लगता था. Secretly everybody knows, right? एक interesting experience share करता हूँ. I was teaching in Thapar few years back. Thapar के student बहुत अच्छी हैं, right? They are full of confidence. They say what they think. They are not scared of anybody. Maybe they come from different parts of India. So वहाँ पे we were discussing this issue के क्या problem है. Now this was told to me by a BTech first year male student, and he told me कि sir, the fundamental problem is as males we all want virgin wives. Secretly we all desire this, whether we would like to acknowledge this or not, right? And you will realize that after the movie Pink, there is this movie, Bareli Ki Barfi. If you have seen this movie, in this movie, Kriti Senan literally tells her future partner that I am not a virgin. Right? Now, there is this new movie, you people should go and watch it, Man Marziyan. The interesting thing about the movie is the landscape is Punjab. And the main protagonist is a female, Punjabi female. Right? In this movie, a Punjabi female living in Amritsar literally tells her married husband that I am not a virgin. Now this was absolutely impossible to imagine 10 years back. That as a woman, you can literally utter these words. Now this is a radical development. What the problem is, this seriously challenges the overall patriarchal psychological authority. Right? So the point that I want to make is that when it comes to Bollywood, most of the times the movies which are generally presented to be very radical, they are not radical, they are actually reinforcing the traditional patriarchal mindset. Let's take another example. There is this very famous song Lamborghini. देखा होगा Lamborghini, बहुत कमाल दिलजीत दोसांझ जी का song है. So at the very start of the song, there are 4 females in the frame of different age group. So the youngest one, who just got married to Diljit, is talking to the oldest one. Right? What is the issue? So I don't feel comfortable with the female friends of my husband. So what should I do? This is the question that this young female addresses to the oldest female. जनरली हमारे कल्चर में ये समझाया जाता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत विजडम वाले होते हैं, उनको बहुत चीज़ों की समझ होती है, राइट? तो ये जो ओल्ड लेडी हैं ये उनको बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देती हैं. शी एक्चुअली डजंट डील विद द क्वेश्चन,
she comes up with her own argument. What? कि बेटा मर्द ते औरत दी तां कदे बनी नहीं है, स्यापा चली जाए. But this was not the question that she was raising, right? So in order to justify her point, she refers to two other women. Middle-aged women है, एक सामने बैठी है उनके, एक पीछे बैठी है. दोनों को वो पूछती है, हाँ जी तेरे घर दा की हाल है, वो कहती स्यापा पैंदा मेरे घर रोज. दूजे ने भी पूछ रही है, वो कहती मेरे घर भी स्यापा पैंदा. Which means that this is what the Punjabi male demands from a Punjabi female. Now, female singers भी हमारे बहुत हैं, right? और Jasmine Sanders is very famous. I respect her a lot, right? But I doubt whether Jasmine Sanders would ever create a song in which four men are sitting in the frame and they are talking about this issue that I am not really comfortable with the male friends of my wife. ये कभी नहीं हो सकता. Because they don't want this. Interesting और देख लो चीजें. पंजाबी songs में किम करदर्शियां का reference है. कायली कौन है वो? कायली जेनिफर, right? उनका reference है. So the imagination is, I can bet you people, अगर किम यहाँ पे आ जाए, एक पंजाबी मेल उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता. वो इतनी confident, daring है मतलब, right? And the kind of lifestyle she lives. So there is this fundamental conflict between what we want to have, right? Now at the same time, Punjabi male, at least the kind of male that we see in Punjabi songs, or let's say as a father of a daughter in the future, would I advise my daughter to be like him? No. I would want to, right? But no. So there is this problem that all these so-called popular songs, and एक और बड़ी interesting fact है, all these people are, most of these Punjabi singers are married, right? And they want all kinds of freedom for their own daughters. They have daughters, but when it comes to the beloved, तब नहीं वो मतलब कोई freedom, right? So I think this problem with media and cinema, एक और बात cinema के context में, in Bollywood also, in Punjabi film industry also, there are only two female characters. One, a very docile. Women की हमारी society में एक ही responsibility है कि you should be lively, you should be bubbly, सभी को खुश रखो, बस. You should be the life of the house, बस यही तुम्हारा काम. और एक पूरी wild women. Real women you never encounter in Bollywood cinema, who are real flesh and blood, complex, subtle, caring, right, desiring human beings, who want to weep, who want to cry, who want to have pleasure, who want to eat, who want to dance, who want to drink, who want to smoke, who want to cry, who want to shout, right? कोई भी नहीं मिलती. Most of the Bollywood movies, आपकी शादी है, the ultimate aim of being a woman is to get married. उसके बाद the second ultimate aim is to save your marriage. Why? Because your husband is having affairs. Towards the end of the movie, your husband will realize कि आप उसका सच्चा प्यार आप ही हैं. सच्चा प्यार आप ही हैं, वो भटक गया था बीच में कहीं. Now my problem with this whole perspective is कि ये मतलब लड़कियों को भी तो सच्चा प्यार हो सकता है, मतलब वो भी भटक सकती हैं मतलब. बट इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसी कोई मूवी नहीं है जिनमें लड़कियां भटकी हैं. वेरी आस्था है उसमें क्या है, आस्था, और वो एक डिफरेंट तरह से डील करते हैं उस प्रॉब्लम को. अल्टीमेटली द इशू इज that there is some kind of frustration in their life, there is some kind of boredom in their life, and that is why they opted for this. If this boredom would not have been there, they would have been decent human beings, right? So this is very interesting. और हमारी मतलब भारतीय नारी इतनी महान है मतलब कि वो अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लेती है. That is something very important in the history of Bollywood cinema. As far as I know, there is only one movie in which a female rejects her husband, and so many people criticized it that
you know, people won't like it. The movie is it's titled Earth. अर्थ एक ही मूवी है जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को वापस अपने घर में आने नहीं देती. It's done and over. So the issue is that when it comes to media, when it comes to all these songs, when it comes to cultural production, most of the times they are not radical. Most of the times they are trying to symbolize issues and present issues in such a manner that they apparently seem very radical, but ultimately they reinforce traditional gender roles on film. So I think we should be very conscious of this fact, the way media, cinema, right, Punjabi cinema or Punjabi songs, they affect us, right? और बहुत individual freedom की तो कोई बात ही नहीं करते. As an individual, I am in absolute support of individual freedom. इतनी support में हूँ that if somebody comes to me and tells me that I want to bang my head in the wall, I will say, okay, do it. It's your freedom, right? I can teach him, I can discuss with him that okay, this should not be done, but I can't really stop him. Individual freedom को ना देने के चक्कर में हम लोगों को पहले ही समझाने तुर जाते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. So I think this is something that we really need to take care of. एक लास्ट गाने से ख़त्म करता हूँ. एक और पंजाबी सॉन्ग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसमें द सिंगर इज़ मेल और वो कहते हैं कि कैसी कुड़ी चाहिए, मुझे ऐसी कुड़ी चाहिए जो मेरे माँ बाप के पूरा मतलब इमेजिनरी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी फुलफिल करे, मेरी जो सिस्टर है उसकी भी इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, मेरे जो परदादे दादे हैं, नानी हैं, उनकी भी इमेजिनरी. मतलब उसको पार्टनर नहीं चाहिए बेसिकली. खुद क्या चाहिए उसको कोई इशू ही नहीं. उसको यही इशू है कि मेरे माँ बाप को क्या चाहिए, मेरी सिस्टर को क्या चाहिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए. वेयर इज इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट? यू नीड अ पार्टनर, राइट? एंड यू शुड डिसाइड, बट दिस इज नॉट एनकरेज्ड. So this is important, and this is done at the subliminal level. We all dance to these songs, we all watch these movies, और बड़ा हमें मज़ा आता है. क्या लाइटिंग, क्या सॉन्ग, राइट? कॉकटेल के गाने कितने हिट हुए थे. But nobody, I think, very few people realize that it is a very regressive movie, right? So remember this thing, या सच्चा प्यार मिलेगा या आज़ादी मिलेगी. दोनों मिलने इंडियन कंटेक्स्ट में पीपल से बड़ा मुश्किल, राइट? और हमें ये सिखाया जाता है कि सच्चा प्यार बहुत ज़रूरी है, आज़ादी दूसरी तो ये वैसी इल्यूजन है, आज़ादी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हमें सच्चा प्यार भी 7 जन्मों का लगता है. So there is a serious problem with the very notion of true love and freedom, right? So this is important. Second, the notion of family. मतलब मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई. बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो समाज को चेंज करना चाहते हैं, राइट? आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, सभी को. मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने माइंड से वो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं. आई जनरली आस्क देम दिस क्वेश्चन कि ऐसा हो सकता है कि फैमिली, जो कि मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है किसी सोसाइटी का, वो चेंज ना हो और सारी सोसाइटी चेंज हो जाए? ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा. मतलब the kind of families that we have, I'm sorry to say this, they are not what a family should be, right? And unfortunately we are not independent enough. We do not cultivate such human beings who have the daring to question their fathers and their mothers. Not that we do not respect them, we respect them a lot, but the idea is that I am an independent human being, right? And this democracy, this political setup gives me the right to live my life the way I want to. And remember, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है. Why? Because they are psychologically more mature than you. आपको तो पता भी नहीं चलता कि वो क्या पॉलिटिक्स खेल जाते हैं. To be very honest, right? So the idea is that this so-called, notion of family, that we need to respect. Of course, we need to respect family, but this idealized notion, and the same is true of the notion of motherhood. This idealized notion of motherhood. Remember, motherhood is an institution, right? एक औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस माँ बनना है, ये हमें सिखाया जाता है. बाकी रेस्ट इज ऑल यूजलेस. बाकी कोई फंडामेंटल इशू नहीं है. यही आपका धर्म है, यही आपका पर्पस.
So I think this so-called idealistic constructs of patriarchal setup needs to be challenged seriously, right? They must not be accepted blindly. At least if you don't want to, at least think critically about them whenever you get a chance. I'm not saying कि go back to your family लड़ाई कर लो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो that my parents are also human beings. They have also limitations. They also have a perspective. They also have a vision, have an imagination. And I may disagree with my parents. There is no issue with this. So this idealized construct of motherhood and family is seriously problematic. And we need to, this is what people all over the world are doing. They are trying to reinvent the very notion of what a family should be. दुनिया में देख लो कितनी मूवमेंट चल रही हैं, वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर की फैमिली क्या होनी चाहिए, और ये हम कोई नहीं सोच that if the society will be transformed in the near future, what kind of family we will be living in. For example, nuclear family suits capitalism, bigger family suited feudalism. So what kind of family will be there in the future when there will be more democracy, when there will be more individual freedom? So this needs to be thought very critically. Finally, the last thing that I would like to talk about is freedom and responsibility. So what is freedom? Generally this question is asked, right? इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है. अगले 100 साल 200 साल 1000 साल भी इस पे सोचते रहो, there is no answer to this, right? What is freedom, right? और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई कमाल का सच किसी दिन मिल जाएगा और हमें समझ आ जाए कि ये freedom है. Freedom gets defined with reference to the historical context in which we are living. There was a time when women were not allowed to have education, so that was freedom. Then they achieved this freedom that they can come out of their homes and get education, so this became freedom. Now we are demanding another kind of freedom, right? And this freedom is very important. Why? Because this is the freedom of movement, right? You must be free as citizens of a democracy, of a republic, to move freely. एक तरफ तो हम डेमोक्रेटिक लाइफ, कलेक्टिव लाइफ, सोशल जस्टिस जिसमें मिल सके ऐसी जिंदगी का तस्वर करते हैं, दूसरी तरफ हम मूवमेंट को ही कटेल कर रहे हैं कि कैसे मूव करना है, कहाँ मूव करना है, ये हम आपको बताएंगे. सो दिस इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नोशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट? उसमें क्या है कि I agree with absolute freedom. मैं तो बहुत extreme freedom imagine करता हूँ that every human being should have absolute freedom. Absolute means absolute, right? So generally this question is raised, क्या करोगे freedom के साथ? On this I agree with Kanupriya that we are not duty bound to tell you prematurely that what should we be doing with our freedom. हम चाहे जो मर्जी करें, ये तो question होना ही नहीं चाहिए. हम चाहे उसको बर्बाद करें, हम चाहे उसका यूटिलाइज करें, हम चाहे अपनी ज़िंदगी खराब कर लें. I can go to this extent. So, but people will learn, right? It's not that once you will get the freedom. एक बात बताना चाहता हूँ. This has been my experience. There has been this Delhi gang rape. सभी ने सुना होगा Delhi gang rape. उसके बाद 2 साल हमने क्या डिबेट की, क्या डिस्कशंस की, मैं बता नहीं सकता. मतलब एवरीवेयर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत लोग बहुत माहिर आए, ऐसे कर दो, ये कर दो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, सारे इश्यूज हाईलाइट हुए सिर्फ एक इशू के अलावा. एंड आई थिंक दैट इज द फंडामेंटल इशू व्हेन इट कम्स टू वुमेन लिबरेशन एंड एमेंसिपेशन. एंड दैट क्वेश्चन, दैट इशू इज द क्वेश्चन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी. That as a society, are we ready to give freedom to women to enjoy their sexuality? कोई नहीं बात करता इस बात की, सभी बहुत चीज़ों को कलर करके बोलते हैं. The underlying problem is this only, because this is my perspective. Indian society is sexually extremely sick. बीमार लोग रहते हैं हमारे, right? And this is the problem.
right? And this is the problem here also, because the moment you demand freedom 24/7, लोगों के दिमागों में पता क्या है कि पता नहीं कितनी सेक्सुअल अनार्की फैल जाएगी और कपल्स पता नहीं कि सारी जगह लोग सेक्सी कर रहे हो. This is what comes to their mind. Honestly ये आता है, वो आपको बताए चाहे ना, उनके दिमाग में डर यही है बेसिकली कि ये ना हो जाएगी, right? So this is very important to realize, right? And as a society, we have reached a point where we cannot really wish away this problem, and we cannot decide not to deal with this question. We need to deal with this problem. And as men, as males in this society, as lovers, as fathers, as brothers, we need to accept it, right? So ये मुझे लगता है कि बहुत फंडामेंटल मुद्दा है. Why? Because in all of this, जितनी भी हमारी डिबेट हुई, मैंने बहुत सारा फेसबुक में भी पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, जितना भी सुना है, the notion of space is very significant. Remember, female body is also a space. Now, competing socio-cultural forces are trying to own that space. आप लोग ये बोल रहे हैं, this is my body, and I should be given the absolute right to shape it, make it, destroy it, right? So this is very important. I think इस बात को हमें lightly नहीं लेना चाहिए. Nobody is raising this issue, right? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज कर दी है, राइट? एंड वी आर स्टिल नॉट रियली कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी. आई डोंट थिंक दिस शुड बी एक्सेप्टेड. आई थिंक दिस शुड बी सीरियसली क्वेश्चनड एंड चैलेंज्ड, राइट? ऑफ कोर्स कोई ना माने इस बात को, he or she is already is absolutely free to disagree with this, but मेरी समझ में यही अंडरलाइन प्रॉब्लम है जिसको कोई भी बोलना नहीं चाहता, राइट? तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा. वन मोर थिंग विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद दैट आई विल एंड. अगर हमें फ्रीडम मिल गया, लेट्स से इफ वी गेट द फ्रीडम, वी आर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू अस. हमें किसी को, हम हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. आपको उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, भी आप प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट वी शुड बी रेडी. एंड एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स हु लिव टुगेदर, वी शुड हेल्प ईच अदर. सिंपल. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. मेरे सीनियर गुरुदेव हैं, उन्होंने मेरे से ये शेयर की थी. सो 15 साल पहले a lower caste woman fell in love with a Jat boy, right? So they, of course, all the people, all the students helped both of them to get married. बड़ी अच्छी बात थी, मतलब cross caste marriage हो गई. That was a big achievement. Unfortunately, the boy died 6 months after the marriage. अभी ये बड़ी problematic situation. अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो कल को घर वाले यही बोलेंगे, क्यों ले लिया स्वाद. So this is the responsibility of the society, that we should help people who are making an attempt to live independent, thinking lives, who are trying to challenge society in small little ways wherever they get the space to do that. So I think this notion of responsibility, we should own it. सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, यू शुड, आई थिंक यू शुड क्लेम इट कि ये हमारी प्रॉब्लम है. हमें वी आर नॉट रियली बॉदर्ड, बिकॉज इन द नोशन ऑफ सिक्योरिटी द अंडरलाइंग फियर इज दिस: when you are psychologically challenging the patriarchal structure, right? Remember in the movie Pink, the last dialogue of the movie is, when a woman says no, it means no. Now ये बहुत मुश्किल है एज ए मेल मेरे लिए, राइट? क्योंकि प्यार का मतलब हमारे समाज में, हमारा मतलब, सॉरी टू से दिस, बट महान कल्चर में हम रहते हैं. आगे पंजाबी
पंजाबी विरसा भी बहुत महान है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा महानता अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में नहीं दिखी। एक एग्जांपल दे देते हैं, मिर्जा मूवी देखी आपने? In that movie there is a scene, the actor, I don't want to name him, so he takes up a gun and asks the girl, प्यार कर दिया मैं नट से Can you imagine the kind of culture in which we are living, where you are literally asking a girl with a gun कि प्यार कर दिए कि नहीं? मुझे तो सच्ची में मैं हैरान हो गया कि वो फिल्म चल पड़ी। मतलब या तो मेरे में बहुत प्रॉब्लम है या लोगों का कल्चर बहुत महान है, हम इतने महान नहीं है, ना ही हम बनना चाहते इतने महान। बट this is a serious issue, right? That मतलब literally this is the kind of aggression that we promote. You know, पंजाबी अदब बहुत महान है, बट इसमें शांति की, पेशेंस से और नॉर्मल डायलॉग से बात करने को हमने प्रमोट ही नहीं किया। इट्स नॉट दैट देयर आर नॉट पीपल लाइक दिस इन पंजाब, देयर आर, राइट, बट द डोमिनेंट हेजेमोनिक कल्चर प्रमोट्स दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव मेल बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल्स, राइट। और डोंट थिंक कि मैं बहुत कमाल हूँ, ये वैसी इल्यूजन आपको लगेगा, right? Why I say this? Because I also exist in this patriarchal culture as a male. At all points of time in my life, I have to struggle against everything that I have been taught as a male, right? मुझे increasingly ये सिखाया जाता है कि अपनी वाइफ से ऐसे डील करना है। I don't want to, but can you imagine? My parents forced me to do it. अब ऑफकोर्स माँ बाप बहुत महान है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे माँ बाप बुरे हैं, किसी के माँ बाप बुरे हैं। द प्रॉब्लम इज दे आर रूटेड इन दिस काइंड ऑफ कल्चर एंड देयर मीनिंग इज सिचुएटेड इन दैट काइंड ऑफ कल्चर, वेयर एवरीथिंग मीनिंगफुल बिकम्स रेलेवेंट ओनली व्हेन यू डील विद योर वाइफ एज अ मेल, राइट। बाकी कोई इंटरेस्टिंग चीज, आई डोंट लाइक रेडियो, बहुत मुझे मतलब आई लिटरली किल दोज पीपल हु आर ऑन द रेडियो, राइट। अनफॉर्चुनेटली मतलब इतना हंसते हैं वो, इतना हंसते हैं, मतलब मुझे बीमार होने लग जाता, तो मैं इतनी क्या खुशी की बात है जिंदगी में। सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग एड ऑन द रेडियो। तो क्या होता है, शर्मा जी खन्ना जी के घर आते हैं, राइट। तो शर्मा जी खन्ना जी से पूछते हैं कि राहुल कहाँ है? तो खन्ना जी जवाब देते हैं कि राहुल बेटा किचन में है। शर्मा जी बौखला जाते हैं, खन्ना जी क्या कर रहे हो? अच्छा वो अर्चना कहाँ है, राहुल की वाइफ? वो बाजार सामान लेने गई है। शर्मा जी और भी वो हो जाते हैं कि राहुल किचन में, अर्चना बाहर सामान लेने चली गई, ये तो मैं किसी और ही दुनिया में आ गया, क्योंकि ऐसे तो हुआ ही नहीं कभी। A female goes to the market, brings all the stuff and comes back, and a maid is cooking in the kitchen. So I think this kind of attempt that is continuously being made by different people, बहुत लोग individual level पे बहुत struggle करते हैं life को improve करने की, और कर रहे हैं, right? And we should all respect all those people. So I think that's it for today, right? And I congratulate all of you for अगर कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो, I feel sorry for that, but this is my understanding, right? And you may reject it, and this is how it is. This is how I understand, and I am in absolute support of this demand that the hostel should be open for 24/7. Right? इसको करना चाहिए। तो जी सर ने कल एक बात कही थी कि अगर हम इस चीज़ को कर देते हैं तो शायद हम नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएं जिसने ये किया है, एंड आई थिंक दैट विल बी टू बी वेरी प्राउड ऑफ। हमें इस बात पे बहुत फख्र होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और लिबरेशन को सपोर्ट करने के हक में एक डिसीजन लिया। थैंक यू।